आज हम लोग जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के सीरीज में सेकेंड सेट देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 10 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम लोग 10 से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मास ऑफ एक्सेस एयर सप्लाइड इज इक्वल टू 23 by 100 into mass of excess carbon, 23 by 100 into mass of excess oxygen, 100 by 23 into mass of excess carbon, 100 by 23 into mass of excess oxygen। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। 100 by 23 into mass of excess oxygen। नाउ इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Mass of excess air supplied during combustion of fuel in order to ensure complete and rapid combustion of fuel, some quantity of air in excess of the theoretical or minimum air is supplied. We know that in order to supply 1 kg of oxygen, we need 100 by 23 of air. Similarly, the mass of excess air supplied is equal to 100 by 23 into mass of excess oxygen. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑटो साइकिल द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन आर 316 केल्विन एंड 596 केल्विन रिस्पेक्टिवली। द कंप्रेशन रेशियो विल बी, आंसर देख लेते हैं, 4.885। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्योंकि T1 इक्वल टू 316 केल्विन दिया हुआ है, T2 इज इक्वल टू 596 केल्विन दिया हुआ है, एंड गामा इज इक्वल टू 1.4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दिया हुआ है। देन कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू, वी नो दैट V1 by V2, V1 by V2, and we also know that T2 by T1 is equal to V1 by V2 to the power gamma minus 1. From this we can write 596 divided by 316 is equal to V1 by V2 to the power 1.4 minus 1. After simplification we get V1 by V2 is equal to this much, and after V1 by V2, after simplification, V1 by V2 is equal to, we will get 4.88. so that is, this will be the answer. Now next question we see, for the same maximum pressure and temperature of Otto, diesel and dual combustion air standard cycle. Option A, the compression ratio will be the same, the heat supplied to the cycle will be the same, the air standard efficiency will have the same value, the heat rejected by the engine will be the same. So let's see the answer. Answer will be D, the heat rejected the engine will be the same. Explanation: for the same maximum pressure and temperature of Otto, diesel and dual combustion air standard cycle, the heat rejected by the engine will be the same. Next question देखते हैं। Which one of the following is not the chief effect of detonation? A loud pulsating noise which may be accompanied by a vibration of the engine, a loud pulsating noise from the wheel assembly, an increase in the heat loss to the surface of combustion chamber, an increase in carbon deposits. आंसर देखते हैं, a loud pulsating noise from the wheel assembly. नेक्स्ट देखते हैं, a single cylinder 2-stroke petrol engine developed 4 kilowatt indicated power if the mean effective pressure is 6.5 bar, piston diameter is 100 mm, the average speed of the piston is 23.5 meter per second, 47 meter per second, 94 meter per second.
186 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर देखते हैं तो 94 मीटर पर सेकेंड। ना एक्सप्लेनेशन देखते हैं। V is equal to 2 ln for single. The indicated pressure is equal to P mean pressure PM LAN divided by 60. From this we can get Ln is equal to IP means indicated power into 60 divided by PM AM mean effective pressure A and A. From there we can get V is equal to IP into 60 and into 2 divided by PMA. From there we put all the value here, and after simplification we will get V is equal to 94.0238 meter per second. Next question देखते हैं। The smallest quantity of a substance which can exist by itself in a chemically recognizable form is known as element, compound, atom, molecule. आंसर देखते हैं। This will be molecule. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोकोमोटिव बॉयलर हैज 137 फायर ट्यूब्स, 44 superheated tubes, 147 fire tubes and 34 superheated tubes, 155 tubes and 24 superheated tubes, 167 fire tubes and 14 superheated tubes. तो इसका आंसर will be C, 157 fire tubes and 24 superheated tubes होते हैं। In a boiler, various heat losses take place. The biggest loss is due to moisture in fuel, dry flue gases, steam formation, unburnt carbon. So, in boiler, the biggest losses is due to dry flue gases. इसका explanation देखते हैं। आंसर देखते हैं dry flue gases and explanation देखते हैं। Total energy balance of a boiler before improvement. We can see here energy input 100% as a form of fuel, where heat loss in blow down 1 to 3%, and radiation heat loss due to radiation and convection is equal to 1.1 to 4%, and heat loss in flue gases we can say 18 to 22%, while boiler energy output energy in the system 71 to 80%. And distribution, we can also see that distribution system losses 5 to 15%. So here we can see that heat loss in a flue gases is at the range of 18 to 22%. Therefore maximum heat losses due to flue gases. Now we can move forward. Next question. The missing equality per stroke is equal to cylinder feed minus indicated mass of steam, cylinder feed plus indicated mass of steam, mass of caution steam, indicated mass of steam, mass of caution steam minus cylinder feed. The answer is देखते हैं हम लोग cylinder feed minus indicated mass of steam. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर initially dry saturated steam is 0.528, 0.546, 0.577, 0.582। आंसर देखते हैं 0.577। द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज 0.577। नेक्स्ट देखते हैं। De-Laval turbines are mostly used where low speed are required for a small power purposes and low speeds for a small power purposes and high speeds for large power purposes. आंसर देखते हैं for a small power purposes and high speed. नेक्स्ट देखते हैं
reaction turbine, when the degree of reaction is 0, then there is no heat drop in the moving blades, no heat drop in the fixed blades, maximum heat drop in the moving blades, maximum heat drop in the fixed blades. आंसर देखते हैं, नो हीट ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड्स. The purpose of governing in steam turbine is to reduce the effective heat drop, reheat the steam and improve its quality, completely balance against and thrust, completely balance against in thrust, maintain the speed of the turbine. तो आंसर देखते हैं, maintain the speed of turbine. एक्सप्लेनेशन देखते हैं, स्टीम टरबाइन गवर्निंग इज द प्रोसीजर ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो रेट ऑफ स्टीम टू ए स्टीम टरबाइन सो एज टू मेंटेन इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन एज कांस्टेंट. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन द स्टीम टरबाइन ऑपरेशन is to maintain a constant speed of rotation irrespective of the varying load. नेक्स्ट देखते हैं, द रीहीट फैक्टर डिपेंड्स अपॉन इनिशियल प्रेशर एंड सुपरहीट, एग्जिट प्रेशर, टरबाइन एट स्टेज इफिशिएंसी, ऑल ऑफ द एबव. आंसर देखते हैं, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द फैक्टर्स ऑन विच द रीहीट फैक्टर डिपेंड्स आर एग्जिट प्रेशर, टरबाइन स्टेज इफिशिएंसी, इनिशियल प्रेशर एंड सुपरहीट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन टरबाइन इज 2 sin square alpha by 1 plus sin square alpha, 1 plus sin square alpha by 2 sin square alpha, 2 cos square alpha by 1 plus cos square alpha, 1 plus cos square alpha by 2 cos square alpha. इसका आंसर देखते हैं, 2 cos square alpha divided by 1 plus cos square alpha. तो ये था हमारा सेकेंड सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज का.